नमस्कार, मैं इंद्रनील नमस्कार। चौधरी आप लोग को स्वागत करता हूं कि सर्वकाल म्यूजिक के जो यूट्यूब चैनल है उसमें ये लाइव ये प्रोग्राम आ रहा है, फेसबुक चैनल पे भी आ रहा है। तो आप लोग जुड़े रहिए, सारी दुनिया से लोग जुड़ेंगे। मेरे ख्याल से हरजीत जी ने बताया था मुझे कि 70,000 से ज़्यादा लोग हैं और इनमें से संडे का आज माहौल है। हमारे यहाँ पे संडे मॉर्निंग है, इंडिया में संडे इवनिंग है। तो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सबको। और आज हमारे बीच में जो स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर आनंदिता मित्रा, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक सितार प्लेयर है और सितार प्लेयर के हिसाब से ही आज हमें उनके क्वेश्चन करेंगे। बट शी वेयर्स मेनी हैट्स। शी इज a doctor, she is a sitar player, she looks after the family। तो चर्चा करेंगे, एक इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं तो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया जाए कि इतने सारे स्किल्स एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो श्रोताएं हैं पूरे विश्व के सर्वकाल के, वो जानना चाहेंगे अनिंदिता जी आपके बारे में। आपका बायोडाटा मैंने पढ़ा, तो उसके बारे में अगर मैं आपके बायोडाटा को पढ़ने लगूं तो शायद आधा घंटा इसमें निकल जाए। आपने इतना अचीव किया है, तो संक्षेप में इन अ समरी आप काइंडली हमारे श्रोताओं को बताएं अपने बारे में, अपने ऑब्वियसली सितार के बारे में, डॉक्टर होने के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप करें। Namaskar. First of all, wishing everybody a very happy Independence Day. I am a doctor by profession, and also along with that, actually, I have learned sitar from a very young age, from 5 years of age. My mother was a sitarist, and she was a teacher also. And from that time, when my mother was learning from my first Guruji, Pandit Jai Gopal Raiji, so I also used to listen and go to the same school. So first I started with Kathak because I used to love dancing. And then my first Guruji, he asked that he will teach me sitar. So my mother was a bit apprehensive, but anyway, I started at that time. And along with that, I started learning vocal classical music also and Ravindra Sang. So I was in a convent school, so my academics was always very uh, strong and all. So at that time, I was continuing both. So at the age of 10 years, I attended All India Music Competition in Allahabad, and I was the winner. Then after that, I went to Doverlin Talent Search Competition. There I was also the winner. I was also the junior radio artist in AIR Kolkata by then. And I had many other prizes at that time. Besides, I was also the school topper. So when I got through joint entrance, I got through medical and engineering also. So my family, as they are academically very strong, and naturally everybody encouraged me to take up medical line. But my sitar was always with me. And so at that time, when I was studying in Calcutta, I started learning from Pandit Santosh Bandyopadhyay ji. By that time, I had completed my Sangeet Prabhakar, that is B News with distinction from Prayag Sangeet Committee. And so, by taking my first Guruji's permission, I started learning from Professor Santosh Bandyopadhyay ji. And after that, I pursued my post-graduation in medicine, and I am a gynecologist. And along with that, I was continuing my sitar, and I had a family also, and I have a son. So now I'm in service, I'm a gazetted officer. So everything I'm trying to balance and continue. And that is all. And as my profession is very difficult, and now we are COVID warriors, so it is even more difficult for us when we are in hospital. We are very busy, and when I'm at home, when I get some free time, I try to pursue my music. So very fantastic, Anindita ji. I'm curious to know. It is so hard for a doctor to be a sitarist and a sitar player to be a doctor. So a very difficult question.
if you were to be only a doctor, would you have done better? Or if you were to be only a sitar player, would you have even done better, you think? Or you are able to absolutely balance both the professions? No, actually, I think that both help each other Hmm. because I am into one of the highest professions, and I am also I get lots of tension, Yeah. and so I think this music helps me relax. And Wow. not only performing for others, it Yeah. also keeps my mind at peace. And I see. what I think is that it helps us not to go into any depression. And whenever I am in an off mood or I feel sad, I sit with my sitar, I play whatever I wish, and it helps me to relax. And I Mm-hmm. think it has helped me in my career also. True. Because Wow. many people say that if you only pursue studies, you will be a great academician. But Yeah. it is my personal belief that music, especially Indian classical music, has helped me a lot, and it has never disturbed me in my career. So Wow. it is always a compliment Wow, to be a always a musician. compliment. That's very, very well Yeah. said. And being a doctor, that's such a great noble profession because in our custom, in our heritage, we say first there is God and after that there is a doctor. This is one. And second, Indian classical music is perhaps the best medium to connect with that nature and for the Almighty. So you're doing it both. So I haven't met across an artist Yeah. who is a doctor and a doctor who is an artist. So that is fantastic. It's a great experience, Arjit. To I've just been introduced to Anindita ji few hours ago, and I'm very glad that I'm been able to present it to the Sarvakal uh, family. We call it an extended family, and we are growing in a geometric progression. At this point, we have over 70,000, and there will be a time we think we will have 1 million, Absolutely. extended Yeah. family. Hoping Yeah. for the best, yes. Yes. Very, An- I'm Ankita ji, yeah, having you जी, जी, ask a question, please. Yeah. yes, अंकिता That's जी, yes. what, or your जी, comment. जी, Yes, जी, I am having one like Anindita ji. Very nice to meet you in this Nice platform. to meet you too. Yes, thank you. And just I wanted to ask, what will you say, like, how to practice for the new generation who all are saying, like, some like too much pressure of study pressure. How will they manage time? Can you say a bit about time management, right? About academics Wow. and when to practice? Because it's a hectic day, especially in India. Yeah. Yeah. Especially in India, academics is Anindita, generally, I think it's very tough. I know. And but what I would suggest is that कानपुरा ऑफ कर दें, see, if Tanpura, yeah, Tanpura little bit. कानपुरा थोड़ा ऑफ कर देंगे okay, आप okay, Yeah, yeah. थोड़ा, जी, Little bit sure. background is also good. Yeah, we are Mhm. enjoying. जी, जी, थैंक So यू, actually, studies in India, especially uh, those of us who come from educated families, we first of all prefer studies. But Yeah. I think music, even if you don't become a musician, it Mhm. helps you in many other ways, even in your progression in your studies. So if someone wants to learn and is determined to learn, I think he or she can manage. Manage. Especially, yeah, in other professions, I think they get a bit more time. But in my profession, at least I can say that I am giving night duties. I am engaged in the morning. Mhm. So I have to find my time. That time management is very important. Yes. And throughout my life, I have been managing it. Yes. Of course, with the The help thing of is, my gurus and my parents, they have guided me, yes. and they have always encouraged me. That I have got from my parents, that they have always encouraged me to Pranam keep to my all music. Pranam to your parents, all your Yeah. gurus. Yes, We are having a doctor as well as so well brilliant musician. So Yeah. like really True. great for us also and for our True. society to grow. And you are an example, a true example of how True. to manage both. Like True. always, we start crying like, oh, time nahi mil raha hai. It's so much studies, time is not there. So thing is like if you want, you can do it. The thing Well is like said. you want, if you can, you have to have the determination, right? I Well mean said. the Well thing said. I, is, yeah. Well yes, said. yeah. Now, I would And like to at another, this point, yeah. Sorry, I wanted to know a little bit more about those great parents, and also a little bit after you got married about your, Husband. your husband. I would say
people say better half. Yes, I don't know my which half is parents better, but actually, probably the better half. And then your son also. Yeah. Yes, please. yeah, definitely. Actually, I'm lucky to be born into a very highly educated family. My father is an engineer. My mother is a teacher and a writer and a Wow. sitarist. Wow. And one more thing is that at this age, she has recently won a prize in the telegraph competition during the pujas, and her name recently came out in the newspapers also. Her Wow. name is Anindita Mitra, and Mm, my father was also in a very high post. And so I got encouragement. All my aunts and aunties, they're either doctors or engineers or professors. And so from the very beginning, I aimed that I should also be something. And you know, actually, always it was told that you should first do something and then you think of marriage and all that comes secondary. So naturally, I was into these, and then after I got married, I also got married into a very highly educated family. My husband is a specialist doctor. My father-in-law was head of the department of Arjigor Medical College. My mother-in-law is the professor. So uh, mm. it's going on, and she was a Bharatanatyam dancer also. Oh, Yeah, wow. so you got the Excellent. full So support, right? They understood the meaning Yeah. of culture, everything. So like that's And your great. yes, son? About your son, you my want to say a son few is words? in 12th standard now. 12th standard now. Is he interested in classical music? Is he learning? Actually, I have taught him, but Oh, he's a Gen X, so he has learned it. And but yeah. he's also interested in Western music. Mm. So Nice. let's see. Yes. Wow. He can balance the time again, like, you can do Western God music bless as well as hope, classical music. definitely. Yeah, he will definitely he will excel in his life, whatever Yeah. he pursue. Like he will, Thank you. yeah, Yeah. God Yeah. all his success. Absolutely. So like Absolutely. क्या So, बात है Anandita ji, we talk about, and Ankita ji, you can add to the comment after, Anindita ji finishes. We talk about a glass ceiling which exists for a woman in any career. And when it comes to, Indian classical music, it is no different. So, I mean, people know about glass ceiling, but I would like to define it a little bit in easy terms. That when you look up the sky, you can see clear sky. But glass ceiling is something which is invisible, but there is a ceiling. So if you have to you have to fly, you have to break the glass ceiling. So this challenge is mainly for a woman in any profession. My question here to Anindita ji is that, do you think there is a glass ceiling? If there is a glass ceiling, how do you combat it, and how do you confront it, and how do you get the better of it? Definitely, there is a glass ceiling and there was, but I think it has decreased to some extent. But what I feel about me is that as I am in such a profession where a female doctor and a male doctor are not differentiated, and we have to work shoulder to shoulder with each and every of my colleagues, and I don't get any special preference for being a female there. yeah. So Mhm, naturally, I don't feel any glass ceiling effect there, mhm. because the position I am in, they have to accept what I am. Yeah. And being a musician, I am musician by passion. Mhm, So whatever it might be, I will continue playing, even if I get fame or I don't get fame. I'm not uh, running behind that. mhm. So the glass ceiling effect, maybe those who are only musicians, I don't know, maybe they might face, but as I have both the professions, so by God's grace, I haven't faced such Any such glass difficulties. ceiling. And also, let me add, probably because your earlier generations have worked so hard, and you're working it now for the next gen, that you're Hmm. slowly erasing that kind of gender disparity, to say the least, right? Yeah, yeah, I Yeah. feel so. Yeah. Yeah. Ankita ji, you want to add something on the glass ceiling itself, please? What do you think? Yeah, like definitely what she said. Like after Mm, that, I shouldn't say actually means whatever she said that is correct. Yeah, you know, like individuals, individual we all are individuals, right? So individual will have individual mm, problems, different families, different problems. But that is we have to overcome. mhm, If I want, I have to do that. If mhm, I want my society to grow, I'll do something for the society. If I want anything, means it's totally about my will.
True. and how I am managing that, True. and how I True. am breaking that, and how I am managing that. It's totally about the individual, I Sure. think, like individual problems, and we have to overcome, and we have to Well said. Well said. And this is again the I would say the reflection of your confidence, that in last question you answered that probably there is a glass ceiling, but I think it doesn't exist for me. That's fantastic. Okay, Yes. so moving forward, sitar again, any string instrument is challenging. So you were in dance, you were in vocal, and in sitar as well. So why and how did you choose sitar over your say dance or your vocal? Actually, I am. Uh, Sitar is like my companion, because from the very first, it has been with me. So I love singing, but still, and I try to imbibe that also into my sitar. But sitar has accompanied me, as I had told you earlier also, that I had won the governance medal when I was in school, and also the school all-rounder award, and I was the best cadet of NCC, that is National Cadet Corps, and Uh, that's from West Bengal, Sikkim, and Andaman contingent. And I um, had the privilege to attend the Republic Day camp in New Delhi, and I right, stayed there for 1 month. right. We visited the governor, the president's house, the prime minister. The prime minister Rajiv Gandhi had come for our prime minister's rally, and we Nice. had performed. Yes, and I had attended a tea party with President Gyani Jail Singh I at the Wow. see. I president's see. house. Wow. Yeah, Yes. fantastic. And क्या बात है? there, but you'll be, I don't know, very happy. I was very happy with all those things. I was into rifle shooting, I was into drill, and along with that, that sitar went with me to Delhi. I was Fantastic. only in class 8. Yes. Yeah. And that was, I was also a part of the cultural team there. And Uh, at that time, it was about when I was in class 8 or 9. So we had an Indo-Western competition, All India. And for the first time, West Bengal had a rank. They got the second runners-up prize in whole India. for what? So we had Ro- ro- for this Indo competition, the thing we played, which was a group effort. Oh, Okay, yes. So Yeah. we were two sitarists and in that camp, and one tabla player who was also a female, and that was wow. quite That rare. That you know, in generation, so that's it was true. not complicated. Yeah. Yes, and we had the western slide guitar and the treble and all those things in the western part, and we had practiced for 4 Republic Day camps before going there, and in each and every camp we had to get selected for the next camp. Wow. So like that, along with my studies, I had to attend those camps, and my school, of course, had helped me because I was selected as the best cadet. So they had allowed me to go for the camps, the 10 days camps, and in each and every camp I got selected, and then I was the best cadet. I received the governor's medal from Pandit Umashankar Dikshit at the governor's house, and Oh, then I had gone to Delhi. So Very there I nice. performed. Yeah. Very And so my sitar is always, I just as I told you, when I was in medical, it accompanied me in my college also. I performed, and I have performed elsewhere in Subay, Benares, and anywhere. Wherever I get a chance, I always like to perform. So, so that it stays with me, and whatever time I get, I dedicate to my sitar mainly. And also I sit with singing sometimes, and that is all. But sitar, I just, it's my passion. Okay. wow. It's Oh, very Wow. impressive. Congratulations for all the achievements, Yes. and Thank may you. you achieve more. Yeah. Sorry. So like more. So like yeah, it's Yeah. like really nice. Yeah. Please Yes, carry on. I would like to add here in our very colloquial Hindi, and Sharjit ji would also maybe appreciate. It is said that ऊपर वाले जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है. तो इस यहाँ पे देना मतलब ये स्किल्स, इतने सारे हुनर, इतने सारे स्किल्स एक पर्सन में देना, एक आना, you're such a multifaceted and diverse personality that it is amazing. And it's a great lesson for the young generation about time management rather than anything else, that you can excel in so many different categories if you have the will to do it. And Yeah. as Ankita ji was also saying that we say we do not have time, but actually there are 24 hours in a day. Yes. Yes. Everyone cannot be like Anindita ji, but even if you do a part of it and Right. balance two skills, that be a great example for the Right. others. Right. Yeah. But for me, what I think is like
not only for next gen, even for adults also, we should learn from how she said, Anindita ji, like how to manage the time, everything. If we want, like we can manage. There are 24 hours. So if we want, we can, like how we brush our teeth, means that is not a part of our work, right? But we have to do those things. That dedication should be there to do that, do things. So how we eat our food, that is the necessity. If we think anything is necessity, that will be done. Yeah, क्या बात। absolutely. मैं थोड़ा सा So, टाइम बीच में yeah, लेता हूँ जी। sure. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज का हमारा प्रोग्राम जो चल ही रहा है, हम लोग सब मिल रहे हैं, बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट आज की हमारे मैडम डॉक्टर अनंता मित्रा जी से। और बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारी जो संगीत को प्यार करने वाली संगत है वो जुड़ी हुई है हमारे पंजाब से। हमारे बहुत प्यारे भाई साहब चंद सिंह जी, जिनकी सारी फैमिली म्यूजिक के साथ जुड़ी हुई। बेटा इनका हरमीत सिंह उस्ताद फजल कुरैशी जी से तबला सीख रहा है, उस्ताद कुलविंदर जी से सीख रहा है, वो सारे जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी बेटी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। बॉबी ब्राउन जी, हमारे पंडित जी चंद्रशेखर जी फांस से, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो मैं कुछ नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा और थैंक्स करना चाहूँगा। हमारे मधुरेश भट्ट जी, आप सब लोग जानते हैं कि बड़े दिनों बाद ईद का चांद काफ़ी देर बाद निकलता है, तो हमारे मधुरेश भट्ट जी बड़े दिनों बाद आए हैं, तो आज उनके दर्शन हुए हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही मधुरेश जी का नाम आता है तो सब लोगों के चेहरे खुशी से झूमते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश जी, हमारे छोटे भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति जोशी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक बहुत ही प्यारे सुदीप तरुण सेन, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पंडित पार्था प्रीतो राय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मधुरेश जी की वाइफ डॉक्टर भैरवी शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सारा सितार परिवार है जी। तो सितार परिवार, आज सितार का प्रोग्राम है, तो सितार के जो प्यार करने वाले, साधना करने वाले सभी लोग जुड़े हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल थैंक यू मधुरेश जी। संजय शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर संगीता बासु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मतराई मजूमदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े प्यारे आर्टिस्ट हैं। तो हम सब लोग, लिपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लिपका जी हमारे इंद्रनील चौधरी जी की धर्म पत्नी हैं, तो वो भी देख रही हैं पतिदेव को, और बड़ा प्यारा प्रोग्राम पतिदेव कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो वाइफ है उसका तो फिर सपोर्ट करना बनता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बीना देसाई बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जितने भी सज्जन, हमारे डॉक्टर समता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में बहुत सारे नाम हैं, रादरी सेन जी, और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हरमीत कौर जी, सिमरन कौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सिमरन कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग सीधे डॉक्टर, हमारे बहन जी मुझमाला जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुझमाला जी, हमारे पंजाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने प्यार के साथ आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए। अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि सब मिलजुल कर इस प्रोग्राम को हम लोग अच्छे से कर सकें। और डॉक्टर साहिबा जो जुड़ी हैं हमारे साथ, उनका पूरी लाइफ की जो जर्नी है, बहुत बड़ा रोल अदा किया उन्होंने अपने लिए। तो ठीक है, सब लोग करते ही हैं, लेकिन इतने इंस्ट्रूमेंट की सेवा और साथ में परिवार की और पूरे समाज की सेवा कर रही हैं। और पूरे कोविड का जो समा रहा है उसमें बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। बड़ी खुशी है कि ऐसे ऐसे महान लोग हमारे समाज में हैं। और हमारे साथ हमारे बहन जी रजनी राव जी, जो कि हमारे क्लासिकल कथक डांसर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का हमारा अंकिता जी का स्पेशल जुड़ना इसलिए भी था कि हम लोग सर्वअकाल.com जो वेबसाइट है, आपके सामने अपना उसको आज लेके आना था हमें, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन पीछे टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है वो उस चीज़ को सेट कर रहे हैं। तो हम लोग आज लॉन्च करने वाले थे सर्वअकाल.com, तो लेकिन सारा एवरीथिंग, थोड़ी सी बातचीत वेबसाइट के बारे में अंकिता जी करेंगी यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि अंकिता जी थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में बता दें, क्योंकि जब लोग हम देखते थे ना सारा सर्वकाल का यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज, क्योंकि 8 ग्रुप सर्वकाल के चलते हैं अलग अलग
किसी पे क्लासिकल म्यूजिक का प्रचार हो रहा है, किसी के फोक का होता है। तो 8 चैनल चलते हैं सर्वकाल की तरफ से, और आप सब लोग अपने लिंक भी वीडियो शेयर करते हैं, पोस्टर शेयर करते हैं। लेकिन सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी की जो वेबसाइट थी वो थोड़ा सा एक साइड से कमजोर थी। तो इस कमजोर कड़ी को पकड़ा अंकिता जी ने, तो इन्होंने देखी, एक दिन कहने लगी कि सारा तो काम सही चल रहा है, तो हमारी वेबसाइट है जो वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो अंकिता जी ने वो सारा काम अपने हाथ में लिया। तो इन्होंने पूरा काम टाइम पिछला 1 महीने से लगी हुई है वो लगातार। तो थोड़ी सी जानकारी वेबसाइट के बारे में अंकिता जी देंगी आपको, लेकिन वेबसाइट हम लोग कल को प्रॉपर तरीके से आपके सामने आपको लिंक वगैरह सारा कुछ देंगे। लेकिन आज अंकिता जी थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में जरूर आपसे शेयर करेंगी। जी अंकिता जी। थैंक यू हरजीत जी। हरजीत जी, हम लोग डिजाइन शेयर कर सकते हैं क्या? अभी मेरे पास जो लिंक आया ना वो प्राइवेट नहीं हुआ, प्राइवेट है, तो मैं ओपन नहीं कर सकता उसको। लेकिन हो गया, लेकिन वो थोड़ा सा वो फोन नहीं पिक कर रहे जो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मैं उसको ओपन नहीं कर सकता। हो गया है लेकिन ओपन नहीं हो रहा। लेकिन मैंने तो एक बार सिर्फ देखा ही हूँ उन्होंने, जैसे फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव जी जी बहुत ही इंटरैक्टिव है। और उसमें ऐसे ऐसे आर्काइव हैं कि एक बार अगर जल्दीबाजी में नहीं, एक बार आप आ जाए वेबसाइट में, देन आई थिंक अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काफी टाइम उसमें आप देंगे, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है एंड वेरी इजी टू नेविगेट, व्हिच आई थिंक। सो जब हम जब हम मेन देखे वेबसाइट को, तब मेरे दिमाग में वही था कि इट शुड बी, द वेबसाइट शुड बी द वर्ल्ड फॉर सर्वकाल। ओके, दैट मतलब जैसे ही हम लोग पेज ओपन करते हैं और इट शुड बी वेरी इजीली एक्सेसिबल, राइट? तो यहाँ पे नहीं, यहाँ सो मेरे दिमाग में वही था कि वेरी कॉन्क्रीट थिंग वी शुड डू, ताकि मतलब लोगों को सब कुछ पता चल जाए कि क्या चल रहा है। क्योंकि आई नो, मतलब हम हरजीत जी से इतना बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वो सोसाइटी के लिए क्या सोचते हैं, राइट? तो उनका जो सोच है वेबसाइट में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका बहुत चलता है। सिर्फ हम लोग जो देखते हैं वो तो सिर्फ डेली वो आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। दे रहे म्यूजिक की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ यहीं पे नहीं चल रहा है, उनका ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है उनका सोच जो है। तो मतलब यही है कि व्हेन यू गेट टच विथ अ गुड पर्सन, योर मेंटालिटी फुल चेंज। लाइक व्हेन ही इज डूइंग, आई शुड आल्सो हेल्प। तो हम लोग तो कुछ भी, कोई करवाता है, हम लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो मेन यही है कि हमको जो सोच था इनका वो सबके सामने हमको लाना था sarvakal.com में। तो वैसे ही करके मेरा जो सोच था वो हम पूरा एकदम से स्टाइल किए, डिजाइनिंग किए। और सर्वकाल का और एक जो है आने वाला है जो अवार्ड सेशन, किसी को पता ही नहीं कि सर्वकाल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी देती है। 2020 से वो लोग स्टार्ट किए, तो ये सब अवार्ड पेज में है सब कुछ। ये है, और भी बहुत सारा अवार्ड्स है, 3 अवार्ड्स है। एक है और क्या क्या है हरजीत जी, अगर आप हेल्प हाँ करें। जी बिल्कुल। हमारी सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी की तरफ से हमने, वैसे तो 2015 से हमने शुरू किया था एक संगीत सेवा अवार्ड। और जो भी जो आर्टिस्ट हैं या अच्छे हमारे संगीत की सेवा करते हैं, जिन्होंने बिना किसी लालच के, बिना किसी ये चीज देखे हुए किस जात का है, किस मजहब का है, उन्होंने देखी नहीं ये चीज, तो वो सिर्फ सेवा कर रहे हैं, वो किसी भी कंट्री में है। तो हमने कोशिश की कि उनको एक, हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि अगर इनाम में कुछ कुछ भी मिल जाए, एक पैसा ही मिल जाए इनाम को, वो बहुत बड़ी चीज होती है। उससे इंसान को होता है कि मैंने ये करना है। जैसे डॉक्टर साहबा हमें बता रही थी कि वो यहाँ पे गए तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास, तो उससे ये नहीं है कि उनको बहुत कुछ मनी या कुछ ऐसा मिल गया होगा। वो एक बहुत एक होता है कि कोई इंद्रनील जी को मिला तो उन्होंने कहा कि इंद्रनील जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको जारी रखिए। तो इसी से फिर आर्टिस्ट के अंदर एक भावना आ जाती है, प्यार आ जाता है कि मैंने इस काम को करना है, दिल से करना है। तो उसी वजह से सर्वकाल में भी हमने सोचा कि जो लोग इस तरीके से सेवा करते हैं, जो पीछे रह के रहे, जैसे बहुत सारी टीम है, आप मेरे को सर्वकाल के इस प्रोग्राम में देख लेते हैं, लेकिन पीछे जो इसके काम करने वाले हैं तकरीबन 70-80-100 लोग,
वो नहीं दिखाई देते। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका काम छोटा है, उनका काम हमारे से ज्यादा है। तो ये चीज बहुत बड़ी रही और हम तो लोगों ने ये हम सोचा। लोग को ये सब सोच हरजीत जी कभी किसी के सामने नहीं आ पाया कि जी आप इतना अच्छा इसका सोच, तो ये मेरा दिमाग में हर टाइम से था जी कि ये जी लोग तक पहुंचाना है। जी और बिल्कुल। ऐसा एक अवार्ड का, क्योंकि जी ये मतलब वही हम लोग बोलते तो बहुत कुछ है कि ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जी जब हम जी लोग दिखाते हैं तो जी जाके हम लोग का ये बनता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो तो ये एक पेज हुआ। उसके जी बाद और एक चीज़ है जो ICMF है, जो जी सितंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। वो जी जी ऑनलाइन रह के भी हम लोग इतना अच्छा मतलब फेस्टिवल कर सकते हैं, जी और इतना आर्टिस्ट को कनेक्ट करके कैसे करके कॉन्सेप्ट बनता है। तो हम जी सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लीज़ जुड़िए। जो ICMF जो है, जो फेस्टिवल है जी कैलगरी का, जी जी बिल्कुल। तो तो वही है। मैं थोड़ा सा यहाँ कहना चाहूंगा कि ICMF जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो लोग कहते हैं नाम क्या रखना है, हमने कहा भी कोई ज्यादा इस चक्कर में रहेंगे। ICM इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल। तो हर साल ईयर चेंज हो जाता है। 2015 से शुरू हुआ, 16 रहा, 17 रहा, 18 रहा, 19, 20, 21 चल रहा है। तो 21 ICMF आपके सामने सर्वकाल एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेले के अंदर एक ये सारे सिस्टम अलग अलग जगह से चल रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि आज का जो प्रोग्राम है, मैडम अनिता मित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी ब्लेसिंग करें ताकि हम लोग सारे मिलजुल कर ये अच्छे तरीके से सेवा कर सकें। इसमें मैं थैंक्स करना चाहूंगा वेबसाइट के माध्यम से हमारे अंकिता साहा जी का, जिन्होंने एक चीज अपने हाथ में ली। क्योंकि मेरे से जब बात हुई उनकी तो मैंने कहा जी मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, आप जानिए वो अच्छे का जिस तरीके से बनाना चाहे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, पूरा 1 महीने से ज्यादा हो गया उनको लगे हुए। तो सर्वकाल की पूरी टीम की तरफ से हम लोग अंकिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना टाइम एज ए वॉलंटियर आपने सर्वकाल को दिया है। तो उसके लिए हमारे पास और कुछ नहीं है, एक ही चीज कह सकते हैं कि बाबा जी के चरणों में कि वो आपके सिर पे हाथ रखें, तो आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और आपको यही सेवा और ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का मौका मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी सब बिल्कुल आप थोड़ा सा और बता दीजिए, तो फिर हम लोग फिर मैडम के पास चलते हैं जी। And I would like to thank specially the sponsors of ICMF, जो जी मतलब बहुत अच्छा काम किए। और वो लोग सामने आए, तो उन लोग का भी आप लोग सब देख पाएंगे कि विदाउट जी देम वी आर नोवेयर। क्योंकि जी वही है। तो थैंक्स टू देम ऑल्सो कि वो लोग आगे आए मतलब सर्पाकाल में। और फिर अपना जो भी है उन लोग के वजह से स्पॉन्सर किए वो लोग। ये भी एक पेज था। और इतना अच्छा अच्छा 2012 से लेके कैसे स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा अगर 2 लाइन में अगर बोल देते हैं हरजीत जी, क्योंकि हमको तो पता है, सब देखेंगे भी। थोड़ा सा अगर बिल्कुल जी के बारे में जी बोल देते हैं, समर शाह जी के बारे में भी। जी जी तो थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता जी। हम लोग 2012 में बंगालियों के घर में बैठा खाना खा रहा था मैं। अच्छा। ये बंगालियों की मेहरबानी हुई। शाम को हम लोग बैठे थे, संगीत सुन रहे थे। तो बैठे बैठे मेरे को उन्होंने कहा, हमारे टुल्लू बहन है, वो कहने लगी कि आप क्लासिकल म्यूजिक की कॉन्सर्ट शुरू करो। मैंने कहा जी मैं तो क्योंकि मेरी आदत है सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की। मैंने कहा जी मैं $12 की जॉब करता हूँ, तो आप मैंने घर भी पालना है, तो मैं क्लासिकल म्यूजिक का प्रचार कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं हरजीत भाई आप कर सकते हैं। बस वही शब्द उनके रहे। बस उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसी जगह पे बैठे बैठे प्रोग्राम बना, उसी जगह पे बैठे बैठे फोन किया पंडित समर शाह जी को। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं आऊंगा, ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो बस ये 2012 से ये चीज शुरू हुई, करते करते 2021 आ गया है। तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। उन सभी जी। लोगों का दिल से धन्यवाद है जो लोग बड़े प्यार के साथ इस सेवा में जुड़े हुए हैं। उसमें हमारा सर्वकाल के एग्जेक्टिव टीम ही नहीं, सारे वॉलंटियर्स, सारे आर्टिस्ट जितने छोटे हैं बड़े हैं, सब उन्होंने उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। जैसे हम लोग सब जानते हैं पंडित राजन साजन मिश्रा जी, बेशक हमारे से वो शारीरिक तौर पे हमारे साथ नहीं रहे पंडित राजन जी, लेकिन उनका प्यार, इतना आशीर्वाद मिला मेरे को। क्योंकि मैंने जिंदगी में सबसे पहली जो छोटे होते कॉन्सर्ट सुनी थी वो पंडित राजन साजन जी की थी 1988 में कुरुक्षेत्र में गीता भवन में।
तो वो प्यार ऐसा बना कि 30 साल बाद हमने कैलगरी उनको बुलाया, तो वो संगीत का प्यार, उनका आशीर्वाद। कल परसों ही पंडित साजन मिश्रा जी का भी बर्थडे था। अच्छा। तो हम लोग पंडित जी को उनके बर्थडे पे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे सर्वकाल की टीम की तरफ से। तो इन सभी आर्टिस्टों का बड़ा प्यार रहा, बहुत आशीर्वाद रहा। तो जब आशीर्वाद होता है तो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास ऑनेस्टी है, तो बस कोई भी काम आप करना चाहें, कहीं भी करना चाहें, कोई कंट्री ये नहीं कहती कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते, कहीं भी आप पहुंच जाएं। बस अपने दिमाग में एक चीज जरूर रखें कि आपको सच्चे सुच्चे रहना है। अगर सच्चे सुच्चे रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। बस इस चीज से आगे आप जाएंगे। तो बस यही वजह थी कि सर्वकाल आज आपके प्यार के सामने है, तो आप इसको ऐसे प्यार देते रहें, आशीर्वाद ऐसे हम सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी चलते हैं फिर दोबारा से हमारे इंद्रनील भाई साहब जी के पास। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप ये भी ऐड कर दें कि एक 5 तारीख को हमारी कोलैबोरेशन में जो हो रही है, 4 तारीख को 4 तारीख हाँ जी देखिए दिमाग में मैं गलत बोल रहा था। 4 तारीख को आप बड़ी खुशकिस्मती है कि हाँ हम सब लोग एक बड़ी महान हस्ती, जो तबलीग की दुनिया की बहुत महान हस्ती है, पंडित जी, पंडित स्वपन चौधरी जी, वो कैलगरी में हमारे पहुंच रहे हैं। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन तो आप ये प्रोग्राम देखेंगे ही, तो उसके साथ साथ सर्वकाल यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, फेसबुक लाइव पे देखेंगे। तो जो कैलगरी में हैं लोग, उनको खासतौर पे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टिकट लीजिए। वेट ब्रेड पे आपको ये टिकट मिलेगा। पंडित जी, पंडित स्वपन चौधरी जी हमारे पास कैलगरी में, ठुमरी पूर्णिमा चौधरी ठुमरी फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग सब मिलके कर रहे हैं। तो आप अपना टाइम निकालिए, पंडित जी को, पंडित जी का तबला सुनने के लिए जरूर आए, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि बच्चा बच्चा जानता है कि धीरे धीरे के बादशाह हैं वो, तो ऐसा तबला कहीं सुनने को नहीं मिलता। तो पंडित जी हमारे पास 3 तारीख को आ जाएंगे, 4 को प्रोग्राम होगा, 5 तारीख को सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी की तरफ से उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये भी हमारे सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे महान लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि मैडम बैठे हुए हैं, तो इंद्रनील जी आगे का पूरा प्रोग्राम संभालते हैं। जी इंद्रनील। हाँ जी अनिंदिता जी, आज के प्रोग्राम इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो आज इंडिपेंडेंस डे है जी, आपको ऐसा कलाकार को हरजीत जी ने आज के लिए चुना है जो कि इतना कंट्रीब्यूट कर चुके हैं इंडिपेंडेंस डे में, जैसा आपने कहा। और इसी प्रोग्राम के इंटरवल में ये वेबसाइट लॉन्च होना था, लेकिन आज अभी सबको पता चल, वेबसाइट बिना देखे ही पता चल गया कि टीम ने कितना हार्ड वर्क किया इन द लीडरशिप ऑफ अंकिता जी की अभी वेबसाइट रेडी है। और उसमें जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपकी पोस्टर ही है। दैट इज द लेटेस्ट थिंग वी हैव डन। जब लाइव होगा तो आप उसे देखिएगा, फिर आर्काइव भी हो जाएगा ये इंटरव्यू भी। तो मेरे आपसे एक सवाल करूंगा अभी, उसके बाद हम कोशिश करेंगे अगर आपसे थोड़ा बहुत सैंपल सुन सके तो कुछ हमारी जो ये प्रश्न है वो है कि पीपल से दैट डिबेट दैट क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज हियर टू स्टे. The other group says, no, it's a dying art and very soon Indian classical music will be extinct. So there are two sides of the debate. So what do you think from your perspective? First of all, I would like to say that Indian classical music is like a pillar, a stump. So it has its own place. So nobody can displace it from that. Now, what people choose to pursue is absolutely his or her choice. Now, it is a known fact that Indian classical music is a very rich genre, and you have to work hard to become a real Indian classical musician. So many people prefer to learn some amount of music and then Indian classical music and then shift to lighter genres. That is well, that is accepted. And if you go into fusion music, that is also acceptable. But that doesn't mean that Indian classical music will die. Because I think, and maybe everybody thinks that Indian classical music is the base of every music. Wow. Absolutely. So whatever you are building on Indian classical music. Very so well said. All the songs which we hear nowadays, if you just dwell
bit deeply, you will find some raga or other is there in Wow. it. Yeah. Wow. So, Yeah. what people love to hear, maybe they don't know the bass, Yeah. but they love listening to good music. Hmm. So, Yeah. but at the base, there is Indian classical music. Yes. Wow. Yeah. So, whoever wants to even sing in a sur, what we say, sur and tal. So, whatever you sing, if you want to sing it surela or musically, you should have a base of Indian classical music. Yes, Wow. I would like to add. Thank you. Well said, Anindita ji. It's so true. It's very true. In US, in Minnesota, like I'm also into music, a little bit, not that much, but little music. I'm also a student, so I'm having kids, and like they say like. Oh, why to learn? And many kids are there. Her friends are also there. Why to learn classical music? Okay, in one word, I say in classical music, not only Indian, means classical music is itself is the root. Okay, a root of a plant. Okay, like when the root is strong, you will get from that plant we are getting good fruits, good flowers, right? So that root should be very very strong. Okay, and if the root is strong, like you can sing anything. You can sing Bollywood, you can sing Western, whatever you sing, you can sing the light part nicely. So like the root should be very very strong, and root can't be without the grammar. Classical is nothing but the grammar, right? Grammar part. Okay, True. you can't write anything, you can't think anything without the grammar. True. Okay, so like yeah, so that is the thing. And whoever is saying, I know this is a fashion nowadays, like classical will not be there, there's that. So it's like they are very very wrong, because the bandish what I learned from my grandfather, that I'm teaching to my daughter also. Oh, four Yes. generations. Wow. Yes, so like never it will be end. So like at least in staying in US for about a decade, like I can say like I'm secured in that. I'm not having any Doubts. insecurity or anything. Integrated. Yes, so Wow. like yeah, it's Ex- that way. Excellent. Yeah. Excellent. So moving on from this question, so how are you contributing uh, towards the next generation in building that interest more than anything else? And a follow-up question to that would be, do you have any students now whom you think will be able to take on the baton from you? Um, First of all, what I want at present is I try to promote Indian classical music. I have a YouTube channel, Strings of Sitar, and I have a Facebook page also, which is called Strings of Sitar, through which I try to promote my music as well as other senior persons' music, so that people come to know about Indian classical music. And yes, actually, at present I'm very busy, so I cannot start a school or something like that. But I have some online students who sometimes learn from me online, Mhm. uh, if they want to learn. Otherwise, I mainly perform now, because what I want to send the message is that yes, you can be into any profession, but along with that, if you want, you can continue Indian classical music. And I Excellent. think it will help us in the long run. Even Excellent. when we become more aged, even if I can't perform outside, it will be, what to say, it heals the soul. Mhm. So not only my as a doctor I heal bodies, but music heals the soul. So Excellent. that will help in the long run. Excellent. It is But my do you see any youth into sitar, especially a young lady who is one or two or three names? Do you see anyone who is emerging in India or anywhere in the world who will be the yeah. next At generation? present on see on Facebook, I find many people are trying to learn. But Mhm. what I must advise as a senior, that you must learn with sincerity first. Mhm. Not running behind fame and money. First, learn with sincerity, get proper training, and then automatically that fame will come to you. But if you first learn थोड़ा बहुत कुछ सीखा और उसको you have to go on performing and then ठीक Yeah. नहीं हुआ तो वो ठीक बात नहीं है. Very well. That patience you should have to Patience. learn first. Yeah. Hmm. Yeah. Yeah. So that I think I have learned it with my life, and I think that is my advice to the younger generation, that learn first, take proper training,
and do what you do sincerely. Because as a profession, how I balance both my professions, whatever I do, whichever I do, during that time, I give my full concentration. When Wow. I am in a hospital, when I am a doctor, I never think of music then. I don't even carry my phone there. Very Wow. When nice. I'm with my patients, my phone remains in my bag. Yeah. So I'm totally dedicated to my medical profession then. And when I am at home and I practice sitar, I try to concentrate on this. Wow. So, and do the thing when it is to be done. True. Wow. Everything comes in a process and there are steps to do everything. Right. Yeah. So it will come gradually and continue doing it sincerely. So I Fantastic. think then everybody who ever wants, and she or he should have some talent also, but with that you need more practice, you need Dedication. a good blessings, and Guru Shishya Parampara is Yes. one of the main things in our Indian classical music. Tradition, So yes. you Wow. have to learn from a proper guru so Wow. that you can pursue it. No problem. Yeah. Wow. Yeah. Very well So summed up. like these words, we always know. Yeah, like always know whatever you said, Anindita ji. Like we know. Like yeah, जब एक काम करते दूसरे पे ध्यान मत दो दूसरे पे. But when practically someone says, it's like so inspiring. These True. things, right? True. Like yeah, True. like she said, like when I'm talking to any patient or client, like that time I'm not thinking about music. This True. is like so so calming to hear, True. you True. know, like, and when she's doing her music she's not thinking about patients and क्या whatever बात she, so it's like very very nice. And thanks to you, Anindita ji, for sharing, like your experience. Like these things we hear, but when some practical people say, it's like really very very impressive, very impressive. And you are I know, like from today you will be example of many actually. ओ True. अच्छा, सर्वकाल में देखे थे ना, निंदिता जी ऐसे ऐसे करती थी. Wow. You Very can do so, true. like yeah, True. it's like Absolutely. Absolutely. really nice. Absolutely. I really agree with you. Yeah, Ankita ji. Yes, So yes. क्या बात towards the end of the interview, Mhm. I would like to sum up by asking you a question on what would be your message from the point of view of women empowerment, keeping in mind your both the professions. Actually, first of all, I would say why this women empowerment term came. Yeah. Wow. Because from history we come to know that uh, the women, they were oppressed, suppressed, they were not educated, they were not allowed to educate themselves, and they were not allowed to be economically strong also. So naturally they were not allowed to take any decisions. But times have changed, and we are progressing very fast. So Wow. I think women should first think of education, and then they should be economically strong. And if somebody is that, then nobody can ignore her. Right. So Wow. क्या बात ultimately, Absolutely. she will be able to get a position in the society. So women empowerment socially, economically, educationally, psychologically, and politically, in any field you want, you Yeah. क्या can बात be empowered. Wow. Wow. Very Right. good. Very, Yeah. very, Yeah. very good. Last question I'm having, Anindita ji. Like, whom means you hear, whom you hear in sitarist, as a sitarist, whom you hear in this generation, means in future, Yeah. means past, what, who Yeah. are the legend, the maestros you hear, like you got Your inspired. favorite. Yeah. Your Yes, your favorite. favorite or any Your rags. inspiration. Sometimes we are having not only favorite, so I can let give a little bit more some summed up. Means some rag you got inspired from Ravi Shankar ji or something. So I Yeah. want to know about that part actually, which how to. Yeah, actually, I was very blessed from my very childhood because I have almost heard all legends, starting from Pandit Ravi Shankar, Ustad Vilayat Khan, Pandit Nikhil Banerjee, all of them live, Ustad Amjad Ali Khan, you know. क्या बात So I have heard Hari Prasad Chaurasia ji, क्या and बात who not? Then my Guruji, present Guruji, Pandit Ustad Shahid Parvez Khan ji, he was क्या बात only about 5 or 30 years old when I had first heard him. And from then on, I had become a fan of him. But then I lost touch, because there was no YouTube there.
and we used to hear records and CDs at that time. Yeah. So, and my Guruji was of course inspiring, and they helped us to listen which music you should listen, like Ustad Vilayat Khan's Darbari Kanara Wow. and Pandit Ravi Shankar ji. Even he was inspiration of my mother. And one other thing I forgot to say, my grandfather, who was also a physician, was an Esraj player. So Oh, wow. my mother got inspired from him, and what she used to tell me, that I always used to practice my maths, and Pandit Ravi Shankar ji sitar always used to run in the background. That's So that I heard from her. Yeah. So That is the healing part, that right? Yeah, and quickly let me ask over here that about, in my childhood I have seen, I know, live music, Jaya Biswas ji. So have you heard about, because she's, no, I think she's I last think she passed generation away. sitar player. She was the forerunner, right? Jaya Biswas. Yes, and the disciple of Pandit Ravi Shankar ji. Ah, okay, excellent. Very good question, Ankita ji. So are we going to listen to a few of the clips before we sum up? Is it possible? Yeah. No, Anindita- today, Anindita ji, what are the performance? Yeah. What are we hearing that all wants to know actually? Yeah. Yes, So that's true. actually, I have first Rag Desh, as it is Independence Day. Independence Day, yeah. True. Very nice. Yeah. True. And I will conclude my recital with a dhun on Rag Bhairavi, as it is morning in Calcutta. Fantastic. So, Okay. So Bhairavi, Dhun in Bhairavi, you said, right? Okay. yes, Yeah, ending zone. Yeah, it's a morning in Calgary too, so it's an ideal thing to end. Yeah, जी excellent. Any closing remark? जी थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छी बातचीत का सिलसिला आज जारी रहा जी। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को आज का जो प्रोग्राम है पसंद आया होगा, क्योंकि एक सरदार जी और 3 बंगाली इकट्ठे हो गए तो फिर काम तो अपने आप अच्छा होना ही था। और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको कहना चाहूंगा। Actually, here I would like to say one thing, that जी, जी। during our independence and during partition, Bengal and Punjab were the two important. Forerunner, Yes. forerunner, yeah. यही बात हम लोग लास्ट प्रोग्राम में भी किया। और इसी जी बिल्कुल डॉक्टर अनंदिता मित्रा जी ने बात कही है कि जो हमारे देश को आजादी का जो दौर रहा उसमें कितना बड़ा योगदान बंगाल का रहा और कितना बड़ा योगदान पंजाब का रहा। और सबसे बड़ी एक भी और चीज भी मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग कनाडा में बैठे हैं, तो अगर हम लोग कनाडा में आज बैठ के बड़े मजे से बातें कर रहे हैं तो इसका भी श्रेय बंगाल और पंजाब को जाता है कि अगर कामागाटा मारू जहाज जो इंडिया से चल के मलेशिया से चल के वैनकूवर ना आया होता तो आज हम लोग यहाँ पे बैठ के बड़े मजे से बातें ना करते होते, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग थे उस जहाज में पंजाब से थे। फिर जब बजबज घाट में जो वैनकूवर से वापस किया गया जहाज, कोलकाता में गोरों ने उन लोगों को शहीद किया, तो वो ऐसा उनको उल्टा रहा। वो तो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने फिर जो कमाल वैनकूवर में किया वो आप सब लोग जानते हैं। तो उसकी वजह से आज यहाँ मंदिर बन रहे हैं, गुरुद्वारे कितने बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं, क्योंकि कनाडा में पहुंचने का जो काम था उसमें जहाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबसे ज्यादा सिख थे, दूसरे नंबर पे मुसलमान थे, तीसरे नंबर पे हिंदू फैमिलियां थी। उनका ये श्रेय है, उनकी वजह से हम लोग कनाडा में बैठे ये प्रचार कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम 15 अगस्त मना रहे हैं तो उन लोगों की बदौलत, तो उन शहीदों को भी हम लोग आज याद करना चाहेंगे जिनकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे बड़े प्यार से संगीत का प्रचार हो रहा है, हमारे देश का प्रचार हो रहा है, हमारे लैंग्वेज का प्रचार हो रहा है, तो हम लोग उनको याद करना चाहेंगे। बेशक वो देश की आज़ादी में शहीद हुए हों या कनाडा में लोगों को अपना हक दिलाने के लिए यहाँ पे लोग आए हों, तो आज भी हम लोग इसी चीज को सामने रख के कि अगर हम लोग इकट्ठे रहेंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हम लोग बिखर जाएंगे तो हमारा नुकसान किसी का नुकसान नहीं होगा, हमारा अपना होगा। इस चीज को हमने रखना है। प्रधानमंत्री हर साल चेंज होता, 2-4 साल बाद चेंज होता रहेगा, वो अलग बात है, किसी पार्टी का आ गया, किसी का आ गया, लेकिन देश हमारा है, तो उस देश को हमने इकट्ठे लेके आगे जाना है। तो इस चीज की आप लोग बाबा जी के चरणों में अरदास करें कि हम लोग इकट्ठे करेंगे काम,
अच्छा काम करेंगे, अपनी लैंग्वेज का प्रचार करेंगे, अपने संगीत का प्रचार करेंगे, तो ये प्रचार हमने करते रहना है तब तक जब तक हमारे अंदर श्वास है। तो इस चीज को हमने बरकरार रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे हेरिटेज का भी प्रचार जी, करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम हो रहा था जी। कि कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि हमारे राष्ट्र जो हमारे जो नेशनल एंथम किसने लिखा है। जी। कुछ ज्यादातर लोग जानते हैं कवि गुरु रविंद्र, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। और मेरे ख्याल से 90% लोगों को नहीं मालूम है कि अभी वंदे मातरम बोल के हम एंड करते हैं, तो वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो इस हेरिटेज को भी आगे लेकर जाना है। और यह अनिंदिता जी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि लास्ट 1 मिनट 2 मिनट आप जो आप इसमें परफॉर्म करेंगे उसमें जनगण मन से ही आप खत्म करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विल कैरी मेमोरी विद इट। बिल्कुल। अच्छा, अभी थोड़ा जनगण मन बजा देंगे या जी जी अभी यस हाँ 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 इज रेडी राइट। ओह या मैं जस्ट एक नाम लेना चाहूंगा। हमारे बीच अभी सुनीता आलूकम जी जुड़ गई हैं। वो ग्रेट वॉलंटियर हैं हमारे ये सर्वकाल के, और हमें उत्साहित करने के लिए जुड़ गए हैं। एंड शी वर्क्स आवर्स एंड आवर्स टुगेदर। वहां से ही हेलो बोल रही है क्योंकि रात भर उन्होंने सोया नहीं, वो काम ही कर रही थी। So thank you very much to all and Vande Mataram. Thank you, Ankita. We can see a very good picture of all the volunteers also in website in that website. So true. very good picture of Sunita ji also is there. So all can see. Yesterday we did that. We completed with her work. और हम सब चाहेंगे अनिंदिता जी आप जल्दी कनाडा और सर्वकाल के स्टेज पे परफॉर्म करें। Yes, thank you so much. And I must thank everybody who is watching, all the viewers, that they have given their precious time for this session. So I thank each and every one of you. Thank you so much. Today being a special day, we would like to say thank you by saying Vande Mataram. So which one will I play, Vande Mataram or Janagana? Both little bit. Okay. So as you know, the Vande Mataram, which the tune we generally play, is also based on Rag Desh. Yes. I would also like to play one or two lines from one of my favorite songs, that is Sare Jahan Se Acha, composed by Pandit Ravi Shankar ji. So I'm just playing one or two lines from that before ending with National Anthem. True.
क्या बात, oh my God, very nice, very I nice. just wanted to add here कि कंपोज आपने कहा रविशंकर जी, पंडित रविशंकर, इनके जो रचयिता हैं उनका नाम भी लोगों को जानना जरूरी है। मोहम्मद इकबाल जी हैं। तो जस्ट टू रिकैप, वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और सारे जहां से अच्छा रिटन बाय मोहम्मद इकबाल जी, और इन द एंड जनगण मन रिटन बाय कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्या बात। प्लीज शुरू करें। Wow, वाह वाह very nice. वाह वाह वाह। Anindita, जय हिंद, bless, जय हिंद, Jai Hind. जय हिंद, वंदे मातरम। Yeah. Jai Hind. Bless you. Mataram. All the best. Wish you all the success in your life, Anindita ji. Thank you. Whatever, may your all the dreams come true. So, like, stay blessed for you and your Thank you family. very- Yeah, God bless. Thank you very much. वाह And wishing you all a happy Independence Day once more. Thank you. Thank you. वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो 5 मिनट जी, बहुत शुक्रिया। और तो हरजीत जी, इंद्रन आपका- जी, अंकिता जी, आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मेरे तबला आर्टिस्ट मृंगमय जी भी जुड़े अच्छा, हुए हैं। क्या बात है जी। Yeah. अमरीनमा हाँ। जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चेहरा दिखा नहीं, लेकिन हाँ, कोई भी हाँ, परफॉर्मेंस, नमस्कार हम हाँ, लोग। नमस्कार, हाँ जी, हाँ जी। कोई भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसके साथ संगत अच्छा नहीं हो। तो आपको बहुत 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 धन्यवाद जी। सर्वकाल तो की तरफ से। 5 मिनट दीजिए हमें, 5 मिनट बाद मैडम का दोबारा से लाइव प्रोग्राम शुरू होगा। तो आप सब लोग, जैसे हम लोग हर रोज कहते हैं कि अपना चाय का प्याला लीजिए, सीट अपनी चॉइस की रखिए, तो जहाँ भी आपको बैठना है बस 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट बाद फिर दोबारा से यही सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी के फेसबुक पेज से प्रोग्राम शुरू हो रहा है। बस आप अपना ख्याल रखिए, मजे से रहिए। 15 अगस्त का जो आज का हमारा कनाडा का दिन है, बस आप खुशियां से रहिए, खुशियां मनाइए। तो साथ साथ में सितार का आनंद लीजिए। और हमारे आर्टिस्ट हैं डॉक्टर अनिंदिता मित्रा जी, उनको दुआएं दीजिए। और गुरविंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज हम दर्शन कर सके हैं बड़े प्यारे आर्टिस्टों के। तो गुरविंदर सिंह जी सर्वकाल के कोऑर्डिनेटर हैं इंडिया से, और बहुत उनका नाम अभी गुरविंदर सिंह जी से थोड़ा सा बढ़ गया है। 24/7 सर्विस, पहले 24/7 थी, अभी 365 हो गया है।
तो हर रोज दिन प्रतिदिन हर रोज वो मिलते हैं, संगीत की सेवा करते हैं। ऐसे ही संगीत की सेवा करते रहें, भगवान उनके ऊपर अपना आशीर्वाद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 5 मिनट की ब्रेक के बाद सीधे सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी के फेसबुक पेज से। बहुत बहुत धन्यवाद।